हेलो साइड पे ओके करो भाई सर बी केयरफुल प्लीज एड़ा मी लगा वेपन स्मगलिंग अटैक्स हैव बीन फॉइल्ड बाय द इनको सारों को साइड पे करो ये कैमरे वाले साइड पे हो जाओ किसी ओके करो आगे नहीं कोई आएगा हियर you could see these are the weapons which has been recovered from the spot लाइव आईडी सारे जाओगे फिर नहीं बोलना ये साइड पे जो सारे चलिए साइड पे चलो पहले क्या लोग सारे पाकिस्तान के हथियारों के जखीरे को यहाँ भेजने की उसे जो है आपको बता नाकाम कर दिया गया है और पाकिस्तान लगातार ऐसी हरकतें कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में किसी भी तरीके से शांति को भंग किया जा सके। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो आप देख रहे हैं जिसके जरिए पाकिस्तान एक बार मैगजीन दा स्प्रिंग में निकले हां सर वो स्प्रिंग आया बात मैं पहले देख लो कोई वायर साइड पे नहीं है पहले एक और मैगजीन आ गया 94191 एक साइड में रख दे जाओ साइड पे रखते चलो ना आराम से 60 अभी तक उसमें टोटल नहीं है अब नीचे वाली लेयर में देखते हैं सर क्या है तीन तो पिस्टल का वो तो मिल गया चाइनीज पिस्टल तो अब नीचे वाली लेयर में चेक करते हैं सर वो गोल्ड सारा कर दो ये फेंकना नहीं है सील करना है ये भी देखो टेप के नीचे से सारा निकालो मजीद साहब आप आ जाओ अंकुश वो सारी पिस्टल की मैगजीन उतारो इसकी भी उतारो मैगजीन इनका देखो एक बार इनका का करो इनको पीछे करके ना इनकी स्लाइड नीचे नीचे रखो बैरल नीचे से क्या कर रहे हैं क्या ऊपर से मत करना यार स्प्रिंग निकला ये हुआ है वो साफ दर्शाता है कोशिश कहीं ना कहीं और देखो अजीत को संभाल लिया हां मेरे च रखिए मैगजीन जो रोज गार्डन के ना जम्मू कश्मीर पुलिस इलाका है यहाँ पर अलर्ट घोषित किया गया है क्योंकि कई बार पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोशिशें पहले भी हो चुकी हैं। ये तमाम जो है हथियार हैं जो यहाँ से बरामद हुए हैं। Drop these kind of weapons and drugs here, apart from the international border, because border gate has been, strengthened by the Jammu and Kashmir police, and we have seen that only few days back when budget was allocated in Jammu and Kashmir, that there was a special provision has to come up here in the Jammu and Kashmir border. So that is what basically Pakistan was facing. That's why they have grenade also can be seen in the videos, and that clearly shows that they are planning something here in. No one will be able to receive it, and that's why pistols, 6 magazines and 4 hand grenade has been recovered. These Chinese pistol, many a time we have seen during the dropping, these were found in the drone dropping attempt. So it clearly shows that this was another attempt of Pakistan to push in weapon here in the At 7:15 a.m., information was received at the police station Vijaypur that one suspicious object is lying at Rakh Barotiyan, about half kilometer towards south of National Highway. And upon this, police party
headed by SHO and STPO, rushed to the spot. Additional SP Samba also rushed to the spot, found object lying there. Bomb disposal squad was called in. Object was checked, and it is found that 3 pistols, 4 grenades, 6 magazines and 48 rounds have been recovered. FIR has been registered at police station Vijaypur and further investigation has been started. सर किस तरह से ये क्या लगता है किस तरह से ये पैकेट यहाँ पहुँचा सर? It cannot be said anything with certainty as of now. Investigation has been started, and anything if revealed will be shared with you all. Thank you, sir. Thank you, sir.